dear students. You're most welcome in today's class. In today's class, we will study about the cyclic structure of glucose. So, open chain structure, which we have learned that it is drawn by using this way, like carbon, it is doubly bonded with the oxygen atom and one of the hydrogen get attached with this carbon, and remember this is carbon number 1. Now this is carbon number 2. On right hand side we write OH, left hand side H, followed by the next carbon atom with the number of carbon 3, and right side it is occupied by the hydrogen atom, and in the left hand side we have OH, followed by the fourth carbon, again the OH on the right hand side, H on the left hand side. Similarly, we come to the carbon 5. Here also OH group is right side and hydrogen is at left side. Now this is the sixth carbon atom, CH2OH. So this open chain structure has explained many facts and reactions, but some of the facts and reactions, कुछ जो facts थे या reactions वो ये open chain structure explain नहीं कर पाया, जिस और कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स थे, कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिनमें ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर के लिए चैलेंजेस बन गए। तो पहला जो एक था कि हम लोग देख रहे हैं कि ये वो पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये है, हम सब देख रहे हैं कि यहां पर एट द कार्बन नंबर 1 इन ओपन चेन हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर इसको कुछ रिएक्शंस भी देनी चाहिए, जैसे इट शुड react, it is not react, it is not giving test with Schiff's reagent। Schiff's reagent के साथ में इसने कोई भी टेस्ट नहीं दिया, पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी देखा गया कि वी कुड नॉट ऑब्टेन द सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन NaHSO3, इसका भी एडिशन नहीं हो पाया इस कंपाउंड में। तो फिर हमने ये कह दिया कि क्रिस्टलाइन एडिशन प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड। दैट मीन्स कि दिस here aldehyde group is not freely present. Okay, it is not freely present. Now sodium bisulfite, no reaction. When no reaction, then we say no crystalline product. Overall we can say कि it could not explain that why the crystalline product is not formed from this structure. It is the difficult case. Now we are coming to the second point. It also has not explained by open chain structure. Pentacetate of glucose does not
react with hydroxylamine that is NH2OH to form ऑक्साइन। तो बेटा यहाँ पे ऑक्साइन फॉर्मेशन भी नहीं मिला हमको जब ग्लूकोज पेंटाएसिटेट ले लेते हैं। इसका हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते थे। सो वी वर गेटिंग the glucose pentacetate. Now from that glucose pentacetate, if I treat it with the hydroxylamine, then we must get the oxime formation. But here we could not obtain the oxime, and therefore it was analyzed that the open chain structure, in open chain structure, aldehyde group CHO group is not free, it engaged somewhere else, it is not free. Okay, so the third one, in case of third point, here let's start with the saturated solution. Saturated solution of glucose. This saturated solution of glucose was made at the different temperatures and followed by crystallization. So first one is at 303 Kelvin we produce the saturated solution of glucose, and then after we leave it for crystallization. The another condition was कि we prepare the saturated solution of glucose at the temperature 371 Kelvin. Again, this saturated solution is also left for crystallization. Now I got the crystals in both the cases. Like in condition A, I got the crystals, and here also in condition B, we got the crystals of glucose. हमें ग्लूकोज के क्रिस्टल्स मिल गए हैं। अब हम उनका मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं। तो we found in A case the melting point was 419 Kelvin, and this form is said to be alpha D glucose. This is called alpha D glucose, or it is also called alpha D plus glucose. Now, just talking about the crystals which was obtained by the crystallization by making the saturated solution of glucose at 371 Kelvin. So here the melting point obtained is equal to 423 Kelvin. Very interesting, you look it at. This is what? This is about beta D plus glucose. Okay, this is for beta D plus glucose. So alpha D glucose and beta D glucose formation was not shown, not explained by this open chain structure. It has no idea that how the alpha D glucose and beta D glucose exists. So after these 3 points, I come across the information that open chain structure
all the time it is not correct. However, most of the properties, earlier I told, most of the properties has been explained by this open chain glucose structure. Let us see the another one, that is cyclic structure. So we were just moving towards the cyclic structure where the aldehyde group will not free, and even the glucose open chain structure comes in the equilibrium state. Okay, how it is happening, let us see in detail. So we come across the 3 points. आप इनको बार बार यहां तक देख लीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत ध्यान से आपको पढ़ने वाले हैं, एंड दे क्रिएट द इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई द ओपन चेन स्ट्रक्चर इज not possible. You just ask the question from yourself. Okay, so you get the better ideas and you will be motivated to write, to learn, to read more and more books and take the help from our YouTube channel. Now here, very interesting point. See what I say, my palm is representing the first carbon atom. Okay, my thumb is towards the right hand side and rest of my hand is like this. So here oxygen is present. This under my finger we have oxygen, then remaining portion like hydrogen. So this carbon atom, see very carefully, this carbon atom is singly bonded with the next carbon atom, right? So this CHO group can rotate. ये rotate हो सकता है. Just like I say it was like this. Now it can be like this also. Means the oxygen which is doubly bonded towards the right hand side, it can come to the left hand side also. Why? Just because of the allowed rotation. Okay, why this rotation is allowed? This rotation is allowed because this is the single bond, and single bond it can move. यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है, ये मूव कर सकता है. इसको अगर आप कांस्टेंट कर लें तो इसको आप मूव करा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंगल बॉन्ड. आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. जस्ट टू नो द cyclic structure, just take few points. We know that oxygen is more electronegative, so one of the shared pair of electron got shifted towards this oxygen and it gets negatively charged. At the same time, this carbon number 1 gets positively charged. Okay, now this was happening at carbon number 1st, and now you look carefully at carbon number 5. So here we have OH group, and each oxygen is containing the 2 lone pair of electrons. Now this hydrogen removes from here and get attached with this oxygen. So if it get attached with this oxygen, so there will be formation of OH. OH का फॉर्मेशन होगा बेटा, और साथ ही साथ इस ऑक्सीजन का ये पॉइंट इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि कंडीशन इज समथिंग लाइक दिस. गॉट इट? So here this hydrogen will come to this oxygen, right? This hydrogen migrates in the form of H plus, and that get bonded with this oxygen and forming this compound. You look at the compound. See, this is carbon, and here what I say, oxygen is now added with hydrogen, means OH. Now it becomes OH. This OH is on my right side.
तो इसको ध्यान दीजिएगा. दिस इज फर्स्ट कार्बन एटम कंडीशन like this. Now coming to the second carbon, of course this is first carbon. Then coming to the second carbon, here we write OH, then we write H, followed by third carbon, right side hydrogen and left side OH. Similarly, coming to the fourth one, अब फोर्थ पे क्या है कि अगेन OH है और यहां पर H है. अब हम आगे बढ़े तो कार्बन मिला हमको और ये कार्बन नंबर 5 था. देन बहुत ध्यान से इसको समझना बेटा, यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज प्लेस्ड हियर. एट द सेम टाइम दिस CH2OH get attached at sixth carbon. Now you look at the oxygen atom. This oxygen atom is now present between the carbon number 5 and carbon number 1. To show it, I can just write it like this. Okay, so my dear, you are looking here that OH group at the first carbon atom is on the right hand side. Okay, so this is called alpha D glucose. Alpha D plus glucose. This is open chain structure of glucose. This is cyclic one, and both the structures exist in equilibrium. Now, what I told you regarding the rotation, so this oxygen, now I considered it was like this. Earlier it was like this, now it is like this. So oxygen in this side, so we shall write carbon, and here I write OH. Look at the position of this OH. ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पे O की पोजीशन पर फर्स्ट कार्बन एटम है. नाउ इसके साथ हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन नंबर 1 फॉलोड बाय कार्बन नंबर 2, देन कमिंग टू द कार्बन नंबर 3, followed by carbon number 4, then hydrogen, and carbon number 5. As soon as you come to this carbon number 5, be alert, one of its valency get occupied by CH2OH, and this carbon is named as carbon number 6. This is carbon number 6. Now here oxygen is present between the carbon number 1 and carbon number 5. So this is said to be beta D plus glucose. I hope you understood well कि there is, these are the two structures alpha D and beta D. These both the structures are called, इन दोनों ही स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इनमें क्या रिलेशन है. What is the relation between alpha D glucose and beta D glucose? They are simply, yes, they are simply anomers. They are anomers. What are the anomers? In alpha D glucose and beta D glucose, the first carbon atom configuration is changed. In one of the alpha D glucose, in case of alpha D glucose, the OH is present on the right hand side,
and in beta D glucose, it is on the left hand side at the carbon number 1. So now we will study about the cyclic structure in the form of Pyranose Pyranose structure. Let us see. Remember, these structures are remain in equilibrium. So alpha D glucose and beta D glucose, and the open structure exists in equilibrium. Okay, I hope you understood. Now we are coming to the Pyranose form. Pyranose form of glucose. This is also the cyclic structure and it represents well. ये कुछ अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है. There is a heterocyclic compound called pyron. एक heterocyclic compound होता है बेटा, जिसको हम लोग पायरॉन कहते हैं. ठीक है, इसको पायरॉन कहा गया. ये वाला जो बॉन्ड है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, leave this bond and put the double bond over here. Similarly, double bond over here. Okay, why I am writing this way? Because the cyclic structures in Pyranose form will be written in this manner only. All right, so let us see the Pyranose structure of alpha D glucose. For alpha D प्लस ग्लूकोपायरानोज. अब जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा पायरनोन पे, दिस इज पायरॉन एंड दिस इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन दिस. यहां पे देख सकते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 हो गया, दिस इज कार्बन 2, 3, 4 and 5. So in this pyron we are getting oxygen connected through the single bond between carbon number 1 and 5. The same thing we were observing in the case of cyclic structure of glucose, that oxygen exists between carbon number 1 and carbon number 5. ठीक है, तो इसको हमने एक ग्लूकोपायरानोज बना लिया, ग्लूकोपायरानोज. ठीक, देखते हैं जरा अल्फा डी के लिए. ध्यान रखो, आपने इस स्ट्रक्चर को पहले बना लिया है. कुछ ऐसा. अच्छा, अब देखो जरा ध्यान देना, बहुत थोड़ा सा ध्यान देना है आपको और ये बहुत अच्छे से हो जाएगा. देखो हमने ये वाला एज इट इज बना लिया, डबल बॉन्ड्स हमने छोड़ दिए क्योंकि डबल बॉन्ड्स की जगह पर हम यहाँ पे ग्रुप्स लगाएंगे सो दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम गेट्स कंप्लीटेड. तो अब यहां पर क्या काम करेंगे, वी नंबर इट 2, 3, 4 एंड दिस इज 5. जैसे ही 5 पे आइए सीधे आप 5 में देखो, 5th कार्बन एटम के पास है हाइड्रोजन एज वेल एज CH2OH. तो CH2OH आप इमीडिएटली ऊपर की साइड लिख दीजिएगा, दिस इज द 6th कार्बन एटम. Now the remaining was hydrogen. Now very very well we are looking at this alpha D glucose. So now in alpha D glucose देखो बेटा, OH group या whatever is written on my right, मेरे राइट साइड में जितना ये ग्रुप है OH, OH, H, OH, ये सारा का सारा ग्रुप कहां लगेगा, डाउन साइड, डाउन. ओके, बाय फॉलोइंग हम लोग क्या फॉलो करने जा रहे हैं, हम लोग एक ट्रिक फॉलो करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड राइट डाउन. व्हाट डू वी कॉल इट, राइट डाउन. ठीक है, राइट डाउन करना है आपको. राइट डाउन यानी जो राइट में लिखा हुआ है उसको हमें इस स्ट्रक्चर में ग्लूकोपायरानोज में डाउन साइड लगाना है. तो देखिए जरा, फर्स्ट कार्बन एटम OH कहां चला जाएगा, इट कम्स टू डाउन एंड हाइड्रोजन अप. नाउ कम टू द सेकेंड कार्बन.
So in second carbon you see that again the OH is at its down place and hydrogen up. Now come to the third. Here we have H followed by OH. Now coming to carbon number 4. Carbon number 4, OH is again on the right hand side, so I will be writing it down and H over here. तो बेटा अब ये ग्लूकोपायरानोज बन गया है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज. नाउ दिस लाइन इज मेड डार्क. इसको बेटा हम डार्क कर रहे हैं, रीजन अभी हम बताएंगे. तो इसको डार्क कर लिया. अब जानते हैं क्यों इसको डार्क कर लिया है. बिकॉज दिस पार्ट इज नियर टू द ऑब्जर्वर. यानी जैसे हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो ऐसा ये 3D में अरेंज रहता है कि इतना हिस्सा हमको ज्यादा दिखता है, ज्यादा विजिबल होता है. दैट इज वाई इसको हमने डार्क लाइन से शो कर दिया है. ठीक. तो नाउ दिस इज कॉल्ड द व्हाट, अल्फा डी ग्लूको पायरानोज. सिमिलरली अब देखो दूसरा कि अगर हमें बीटा डी ग्लूकोज का लिखना है तो कैसे लिखेंगे. लेट अस सी. आई थिंक लिख लिया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं. अब हमें देखना है ग्लूको पायरानोज कौन सा, बीटा. बीटा डी प्लस बीटा डी प्लस ग्लूको पायरानोज. ठीक है. अब देखो बेटा ये कैसे बनेगा, सेम तरीका है. तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो पायरॉन का एक जनरल स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसे हमें ड्रॉ कर लेना है लाइक दिस. आई होप आप ये लिख चुके होंगे, तो हम इसे इरेज कर रहे हैं. नाउ हियर आल्सो वी फॉलो द सेम रूल. सेम रूल बेटा यहां पर भी लगेगा. इसको एज इट इज हमें डार्क कर देना है. ये पार्ट डार्क कर देना है. और डार्क बहुत अच्छे से करिएगा कि इसमें लगे कि हाँ ये वाला पार्ट नियर टू ऑब्जर्वर है. ठीक है बेटा, इसको ध्यान से करिएगा. दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5. दिस इज कार्बन नंबर 5 एंड ऑफ कोर्स यहां पे हम लोग क्या लगा देते थे, CH2OH. ये CH2OH ये कार्बन नंबर 6 है. ये 6th कार्बन एटम हो गया बेटा, 6th कार्बन एटम. यहां पे हमने लगा दिया CH2OH. दिस इज 6th कार्बन एटम, हाइड्रोजन. नाउ अब ध्यान देना है आपको. लुक एट केयरफुली, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा. तो हियर वी हैव टू ड्रॉ द ग्रुप्स. We have to attach the groups. Now you see here on my right hand side we have hydrogen. Okay, and OH in the left hand side. So right down, left up, ऊपर की तरफ लिखेंगे, left up, right down. So right down, left up, लेफ्ट अप, व्हाट, राइट डाउन. तो क्या बनेगा, ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर बन जाएगा भाई. ओके, तो इसको बना लेते हैं इससे ही. सो हियर वी गेट हाइड्रोजन OH. कम टू द सेकेंड वन, द OH is present on the right hand side, so I put it down. Now coming to the third one, hydrogen is present, so we put it downward. Again, now we are moving to this 4th carbon atom. Here we have OH.
third carbon atom we have OH. Now the fourth carbon atom, here we have OH followed by H. I hope हम ये समझ पाए हैं कि अगर ये स्ट्रक्चर बना लिया गया, ठीक है, तो फिर आसानी से ये जो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसका यूज करके हम आसानी से बना सकते हैं इनके ग्लूकोपायरानोज के स्ट्रक्चर्स को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।